Well, I'm going to talk about the last trip I had. I'm going to talk about the last holiday we had. Well, I'm going to discuss, you can say even. Well, I'd like to talk on and I'd like to talk about. So these are a few phrases that you can use in the beginning of an answer. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Welcome to Chitkal IELTS Academic with Professor Usman Gani. And dear Reis and Zoha, how are you? Hopefully you are doing great. Yes, sir. Alham- Alhamdulillah. Alhamdulillah, that's very great. That's very great. And today we are going to start with that how do we manage this time and what are the things that we used in order to manage our time in order to answer accordingly that we may get band 9 in IELTS speaking part 2. Okay. The first thing that we need to do, how do we answer this? How do we, rather, I should say, the first thing is how do we manage time? This is something we have to just talk today on. Okay, and in this, the first thing that we do in answering IELTS speaking part 2 is actually using starters. Using a starter. The second thing is actually using transitional, and the third thing is actually using various expressions or phrases. Well, these are three things that we need to cover today in order to better understand how do we answer IELTS speaking part 2 in a way that we may get 9 bands. Can you name this for me, Mr. Reis? What is this? Using a Using a starter. using a starter. For example, in the previous class, we tried to understand what was our topic. Topic was holiday or trip. So how would you start speaking, Reis? For example, if I ask you the same question, so how would you give a start? Can you please start your answer? Just like it is a very good trip, or mm, Well done. are Well done. we enjoying a very good trip? Are we? It is a great trip. Uh, so in this way we can start this. In this way we can start. Okay, you are saying that we can start with, for example, it is a very good trip, we're enjoying this trip, and it is a very great experience having this trip I'm going to talk about. Very well done, Reese. Thank you so much for your participation. Okay, great. You can say I'm going to discuss about, but the best way to answer this speaking part 2 question is actually the word is I'm going to talk about. So this is the phrase or the starter that you can use in the beginning of answering IELTS speaking part 2. This is the best way of saying, for example, well, I'm going to talk about the last trip I had. I'm going to talk about the last holiday we had. Well, I'm going to discuss, you can say even. Well, I'd like to talk on and I'd like to talk about. So these are a few phrases that you can use in the beginning of an answer. The second thing is, what is the second thing, Zoha? Transitional. Using transitional. Using transitional. So what actually transitional is? Let us try to unfold this first, and then it would be easier for us to go through this. Do you see the second screen I'm sharing? All about transition words? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, please. All about transitional words. Think back to when you were first thought how to write essay. You were probably thought to organize your writing by starting each paragraph with a word like first, additionally, further, secondly, or third. These words are transitional words. Very well done. Think back to when you were first taught how to write an essay. You were probably taught to organize your writing by starting each paragraph with word like first, additionally, furtherly, secondly, third.
It means that when you move on to the next line, when you move on to the next idea, or when you move on to the next thing you have to talk on, you actually use few words. मिसाल के तौर पे हम उर्दू में कहते हैं पहली बात तो ये है कि उन्हें ये करना नहीं चाहिए था, और दूसरी बात ये है कि ये जो उन्होंने किया है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। रही बात उन लोगों की जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मेरे ख्याल में सबने बहुत अच्छा किया है। बहरहाल ये सब अच्छा रहा है। अब पहली बात, दूसरी बात, रही बात और बहरहाल, these are four words actually which are, I should say, transition words I've used in Urdu language. So in the same way there are few words, sometime few phrases, sometime combination of words, and few sentences even which are used as transition word, कि आपने एक बात कही तो एक बात से दूसरी बात जो है उसे मूव करने में कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ बातें ऐसी होती हैं, हमने किसी बात को बढ़ाना होता है, समटाइम हम किसी बात के अगेंस्ट बात करना चाह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एडिशन करना चाह रहे हैं, लेट सपोज, पहली बात तो यह है कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड सेकेंडली, और दूसरी बात ये है, और इसके अलावा, अब सेकेंडली और दूसरी बात और इसके अलावा, ये सारी वो चीजें कि आप ऐड कर रहे हैं चीजें। लेकिन कभी ऐसा होता है कि व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग और आप कहना चाहते हैं कि इस तरह से हुआ, इसके मुखालिफ या इसके बरक्स ये भी हुआ। मिसाल के तौर पर वी इंजॉयड राफ्टिंग ऑन द अदर हैंड, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इन इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है, इन कंट्रास्ट टू दिस यू कैन से, और यू कैन से कि इसके बरक्स ये भी हुआ कि हमने ये भी किया, यानी लाइक और अनलाइक। तो इस तरीके से जो मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं उसमें किस तरह से वर्ड्स यूज होते हैं, इन वर्ड्स को हम देखने जा रहे हैं अभी। होपफुली यू हैव गॉट एन आइडिया व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन। व्हाट आई वाज डिस्कसिंग एक्चुअली, कि जो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं ये डिफरेंट होते हैं, जितनी सिचुएशंस होंगी उतने ट्रांजिशन वर्ड्स होंगे। अब चार चीजें आपने बतानी है तो उसके लिए आपने मुख्तलिफ वर्ड यूज किए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इसके अलावा और सबसे बढ़ के, ये चार वर्ड थे, फर्स्टली, सेकेंडली, अदर देन दैट, एंड अबव ऑल। अदर देन दैट एंड अबव ऑल, ये सारी वो चीजें थी जिसमें आप ऐड कर रहे थे चीजें। क्लियर? समटाइम्स सिचुएशन ऐसी होती है कि आप किसी एक चीज के मुतालिक बात कर रहे हैं तो आपने इसके बरक्स भी बताना है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एंड यू वांट टू टेल समथिंग अगेंस्ट इट। We went watching movie, unlike our friends Mr. Reis who went for having dinner. हम मूवी देखने गए, लेकिन हम इसके बरक्स रईस जो है वो डिनर करने गया। इसके बरक्स, अब इसके बरक्स वो वर्ड था जिसने दो सेंटेंसेस को आपस में क्या किया, कनेक्ट किया। लेकिन यहाँ पे फिर सिचुएशन डिस्पाइट क्या, भी यूज कर सकते हैं। डिस्पाइट भी यूज हो सकता है, वेरी वेल डन। डिफरेंट सिचुएशंस है ना, ठीक है। तो इन सिचुएशंस के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं, जो फ्रेजेस यूज होती हैं, ये जो सेंटेंसेस यूज होते हैं, उनको हम ट्रांजिशंस कहते हैं। वेरी वेल डन। ट्रांजिशन वर्ड दैट कैन कम्युनिकेट ऑपोजिशन और लिमिट द आइडियाज, कम्युनिकेट ऑपोजिशन और लिमिट to ideas and phrases. This is the important thing that we have to discuss with. इस तरह की सिचुएशन हो तो ये ट्रांजिशन वर्ड्स हैं वो यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनलाइक, और, बट, वाइल और एज मच एज। जी, I'd like you to इसी तरीके से, conversely, on the contrary, on the other hand, above all, notwithstanding, despite, ये सारे आप बाद में डिटेल से देख लीजिएगा। Phrases to help you through your IELTS speaking exam. Use these with caution and only when appropriate. Although when they're extremely useful, overuse could sound unnatural, scripted, and memorized. Remember that you'd like to sound as natural as fluent and native speaker. Make sure you listen carefully to the question asked and try and go the extra mile. So आपने कोशिश ये करनी है कि आप जब इन एक्सप्रेशंस को यूज करें तो कोशिश करें कि आप, यू मस्ट साउंड नेचुरल। इनको इतनी दफा बोलें, यू हैव टू प्रैक्टिस ओवर एंड ओवर अगेन सो दैट यू मस्ट साउंड नेचुरल। अगर इसमें थोड़ा सा भी ऐसा फील हुआ कि आप अननेचुरल कर रहे हैं, जिसमें वर्बोसिटी ऐड कर रहे हैं या वर्ड्स खुद से ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट में मेक यू लूज योर मार्क्स। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम देखने की कोशिश करते हैं। जी, व्हाट इज फर्स्ट एक्सप्रेशन, रईस? रईस अहमद? If I remember correctly, it was, this is a great phrase to start talking about something in the past. For example, the first time you were eating English food, you could use it quite easily in part two of the IELTS speaking section. When giving an example, it also suitable for use with part three. वेरी वेल डन। जिस तरह आपने कल बात की थी मिस्टर रईस, दैट वी, इट वाज द फर्स्ट टाइम एवर that we saw Hindu tradition. Okay, we actually practically
had an experience of seeing Hindu tradition for the first time ever in life. तो वहां पर कोई भी इवेंट मेंशन करते हुए आप ये कह सकते हैं. For example, you can say, if I remember correctly, it was that was really first experience. We actually came across a Hindu tradition, and if I remember correctly, it was they used to call it Diwali, I think. Diwali, I think. So अब आपने इसको यूज किया. If I remember correctly, it was Diwali, I think. आपने पहले ये कहा कि इट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैंने हिंदू ट्रेडिशन देखा. और अगर मैं भूल नहीं रहा ना, मुझे ठीक से याद है, तो ये मेरे ख्याल में दिवाली वर्ड था जो वो यूज कर रहे थे. सो दिस इज हाउ यू हैव वेरी नेचुरली यूज्ड इट. ऐसे ही है ना. If my memory serves me well. वेरी वेल डन जी. This is similar to the phrase above. Phrases like these to buy you few seconds for thinking time so you can organize the rest of your answer. वेरी वेल डन. 3 चीजें होंगी. एक तो ये कि आपका टाइम बच जाएगा. नंबर 2, आपका एक्सप्रेशन नेचुरल हो जाएगा. और तीसरा, जब आप चूंकि रिपीटेडली ये फ्रेजेस बोलते रहे, तो 1 या 2 सेकंड में जब तक आप ये फ्रेज बोलते हैं तो आप किसी और आइडिया को सोच लेते हैं.